Yes, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what topic you are able to see that? Organizational communication. Organizational. Oh, okay, okay, okay. So in the very sequence of effective communication, we need to have a brief information of organizational communication because we need to understand this particular phenomenon of organizational communication. Okay, because this is what we all time exercise. This is what we need to expertise in. Okay, and whatever informations in terms of effective communication we studied earlier, okay, in terms of various states, in terms of the features of effective communication, that all need to be applied in this particular specific context of organizational communication by a professional. Okay, see, particularly our focus is to improvise uh, the professional status, okay, day by day. So as we are related with the term profession, professionalism, okay, so definitely that is related to some or the other type of organization, okay, that is related to some formal place, that is related to workplace. Is this point clear, students? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Organization, here we are relating with workplace, particularly that organization we need to focus in terms of effective communication, or whatever skills we were discussing earlier in terms of verbal skills and the non-verbal skills. Okay, that all we need to exercise, that all we need to improve, okay, day by day, in terms of that organizational communication itself, okay, that organizational structure itself. So before going into the term organizational communication, okay, now I think many of you, as we have studied some brief information about communication, so many of you can relate these titles, these words of the title, sorry, okay, organization and communication. So I think many of you can have some idea, okay, what the topic is related to. Can anyone just quickly respond to this? Yes, yes, students. Can anyone just quickly respond to this? What do you understand by this title, organizational communication? As we have studied about communication, okay, we have discussed about the brief information of communication. So if we are relating that particular term with organization, then definitely you might be having slight understanding related to that. What is that? Quickly, one of you. Ma- Ma'am, an ideal way of communication through which we need to gather people and uh, process our Okay, okay. Anyone else? Anyone else wants to say something? Want to add Ma'am, something to in that? organizational communication means it is organized in a manner to on a particular topic to say about that topic about it, to spread awareness on it, uh, to give informations about it, its pros and cons, do's and don'ts, all these. Something Okay, that will be fine. helpful for the public. Okay. Any other answer? Any other student wants to respond to this? ma'am, the goal of it is to reach everyone related to that organization and to whom its impact can be felt. Okay, okay, fine. And see, just you people recall that what was my question? My question was, can you relate
the words used in the title: organization, organizational, and communication. Okay, so what could be the, we can say, related information under this title? This was my question. Okay, although many of you have tried to come to that particular point of answer. Okay, but see, we need to understand this particular title, that is organizational communication. Okay, as you might be observing that I have placed a question mark. So that is the first level of understanding, that what do we mean by organizational communication. Okay, so before understanding this particular title, organizational communication, we need to have a clear understanding of the terminologies used in this title. That those are organizational and communication. Okay, so the word organizational, this has again been considered as a secondary derivative of organization. Okay, I'm using these terms. When we will discuss grammar portion, you will be very clear about what I mean to say by secondary derivative. Okay, but here you just understand this much, that organizational word is related to one of the popular word, that is organization. Okay, so if we have the clear perception of the word organization, then we can easily understand the title. So what do we mean by organization? Organization means, what do we mean by organization? Yes, students, quickly. Means arranging something, building up a setup for any Building up a particular setup. Okay, this is for one meaning. Okay, organizing. Organizing means assembling systematically. Okay, okay, fine. This is Ma'am, one meaning. organization can also be a group. Yes, yes, that is again a very correct answer. Although both the answers are correct. Okay, so please note down these two answers with you people in the notebook, and then you will be able to easily connect with the title. Okay, so one meaning is of the word organization, that is group, and the other meaning of the word organizing, okay, that is one of the form of the word, that is to assemble. Okay, to assemble. So see, that is organizing, organize. And what was the word I was asking? Organization. Okay, so organization is a collective noun. This particular point you need to understand. Organization is what? It's a collective noun. Okay, it's a noun. So it is correctly understood in a way that it is group of participants. Okay, group of members. Okay, association of people, association of member. The very correct word we will use here, that is association. Okay, we will not use here the word assembly or collection. Okay, because those are not the words which will define this particular word correctly. Okay, which of the word will define this particular term correctly? That is association. Okay, people associate and an organization is formed, a group is formed. Is this point clear, students? Yes, ma'am. yes, Okay, so yes, this particular point we need to focus on. Okay, that organization means association of people, association of participants, association of members. Okay, association of infrastructure. That is termed as what? Organization. Okay, association of resources. This is organization. Okay, so in organization, we have to think about these three things importantly. What are those three things? The first one is the people, the member, the participants. Okay, it means the human resource. So the first point is what? The human resource. Okay, and the second point is the infrastructure. Yes, students,
Second point is what? The infrastructure. Okay. And the third thing is what? Third thing is what? Yes, students. What is the third point? The first point is the human resources. Okay. The second point is the infrastructure. Okay. And the third point is the whatever task, okay, is there of that organization, okay, that is also part of this particular, we can say, association. Okay. So there are three things one need to focus on. The first one is the human resources. Okay. The second thing is the infrastructure. And the third thing is the task. Okay. So if we directly define organization, it means the association of people, the association of participants, the association of professionals. If we talk about the workplace, it is in that way. Okay. And if we talk about the verbal aspect of the word, okay, it means the organize. Okay. One more word can be formed by this particular terminology, this particular word, that is organize. Okay. So it means systematic arrangement. As one of the student was mentioning, okay, it is systematic arrangement. Okay. So what has to be systematically arranged? What has to be systematically arranged? The human resources, the components of the organization. Okay. These are the components of the organization: the human resource, the infrastructure, and the task. Okay. So all these three components should be systematically arranged. Okay. And these are interdependent upon each other. Okay. And we can say there is a particular output of this type of arrangement. Okay. And that particular output is occurred or is achieved due to communication among this particular setup of organization. Are you getting this point, students? Okay. What is that? Yes, ma'am. The resultant of that, or we can say the objective of that organization, okay, is to get some productivity, is to get some positive change. Okay. So that happens through communication. Within that organization, with the help of communication, that output could be achieved. Okay. So now if you can see the title, you will be able to understand the concept clearly, what actually we have to study in this. Okay. It means we have to study about the organizational structure. Please note down this point. We have to study about the organizational structure. Okay. And what else we have to study about? We have to study about the communication process. Okay. The communication variety, the communication skills in relation to that organization. Okay. So this is what organizational communication means. Okay. So it means what? Communication within organization and outside organization to get the ultimate result, to get the ultimate output of productivity, of positive change. That is termed as what? Organizational communication. Okay. And as we have discussed that what are the various components of organization, those are the human resources, the infrastructure, and the task. Okay.
So this particular aspect of communication, we need to relate with the human resources also. We need to relate with the infrastructure also. We need to relate with the task also. And then we can come to the exact definition of this particular aspect, organizational communication. Yes, students, is this point clear? Okay. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. organizational communication means whatever task is performed within that group, within that association, and by the people or by the components of that organization with the outside world. Okay, that is all of the category communication. And it happens verbally, it happens non-verbally. Okay, so everything which we have studied earlier, okay, which we have discussed earlier, that all can be related in this context. But yes, this particular organization we have to particularly check in terms of workplace. Okay, which of the organization we are referring here? The workplace, the professional place. Okay, where one person works with the many other. Okay, where one person coordinates with many other, or many other coordinates with that person. Okay, for the task of ultimate output of production. Okay, so this particular context of organization, we have to relate with the workplace, with the professional place, with the formal place. Okay, so if it is related to formal place, if it is related to workplace, if it is related to, we can say, professional place, we can easily understand this particular point, that this particular state has to be dealt with cautiousness. It requires much practice, it requires much expertise. Okay, it requires much caution. Okay, suppose आप या कोई भी पर्सन इफ किसी सोशल प्लेस पे कोई इंटरेक्शन कर रहा है या फैमिली के साथ कर रहा है, तो थिंग्स आर एक्सक्यूजेबल. ओके, बट इफ one is dealing affairs at a workplace, then that particular one has to take care of, because many a time it can happen that things are not excusable. Okay, or the person's work or the person's communication can result into something very serious. Okay, which cannot be reversed, so it can result into many negative things. So that is the reason that communication which is related to some organization which is workplace, which is professional place, okay, that has to be dealt with cautiousness. So this is the meaning of this title, organizational communication. So which of the communication we need to focus here? The communication which happens at a workplace, at some formal organization, at some formal professional place. Okay, which is organization, at the same time which is systematic also. Okay, which is association and which is systemized also. Okay, so many people are there who are associated, okay, to perform many varied tasks. Okay, but each and every task has to be performed in a systemized manner. This is termed as what? Organizational communication. Please note down this point. I am repeating this. Organizational communication means association of many people, to perform many tasks, various tasks. Any word you are suitable with, you can write down. Which perform many or various tasks through
verbal or non-verbal communication, through verbal or non-verbal communication in a systemized manner. In a systemized manner. Okay. So that is termed as what? Organizational communication. This is the context. Okay. Now let us check what all points are there as a field, as an area. What? Organizational communication. It is the consideration, analysis, criticism, okay, of the role of communication in organizational context. Okay. So it means that consideration also happens, analysis also happens, criticism also happens. Okay. And all these are the various forms of communication at a workplace, organization. That is termed as what? Organizational communication. Clear? And next is, its main function is to inform, persuade, and promote goodwill. Now, this is very important. I think this particular context you are understanding, as we have discussed these points earlier also. It means in organization, the main tasks, as we discussed, that certain tasks are performed by various personnels, okay, in the hierarchy. So those are the various tasks: to provide information, to persuade, to promote, okay, and to develop a goodwill. What do we mean by goodwill, students? What do we mean by goodwill? And positivity. Positive? Spread positivity. Positivity. Positivity of what? Positivity of the particular topic means its helpfulness and advantages. Okay. Goodwill in this sense means which that will on the particular topic which will be helpful to the common public. Okay. Wanting Any their other good. answer? Okay. Any other answer? A work which is beneficial for both the parties. Okay. Okay. Any other answer, students? Goodwill. इसका कोई synonym बता सकते हो क्या आप? Yes, goodwill का कोई synonym बता सकते हैं? Ma'am, reputation. Yes, reputation, prestige. Okay, positive reputation is goodwill. Okay, reputation, prestige, if it is positive, it means it is goodwill. Okay, now see, as you can see here, main function is to develop goodwill also, to promote goodwill. It means to promote the positive reputation of the organization so that it can add to more progress, it can add to more productivity. Okay, so it can happen, this goodwill can happen. Okay, the positive reputation of some organization can only happen if all the participants of that organization are working efficiently, are efficient in communication skills. Okay, because if those will be efficient in communication skills, the ultimate task of that organization will be achieved. Okay, and if that particular task is achieved, automatically this particular state will be there of that organization. Okay, and इसका goodwill का benefit क्या है? ये एक business terminology है goodwill. Okay, trade से related बहुत popular terminology है goodwill. ठीक है, goodwill के basis पे जो है organization को resources की availability easy हो जाती है और organization का जो business है, जो trade है, ठीक है, वो बहुत smoothly run हो सकता है. ठीक है, and if this happens, all the
personnel also, all the workforce also is benefited by that. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है. इफ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स अप्रिशिएट करते हैं उसका, बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी of that product, okay, what will happen? Automatically the business will be of good state, okay, and indirectly the workforce of that organization will also be benefited. Okay, so this is again very much important in terms of the success of any organization, and it can happen through effective communication only. Okay, if people within that organization are understanding each other clearly, then the work will be done efficiently, the product will be, or the production will be done efficiently. If there is vice versa situation, this will be negatively affected. Okay, that particular organization will not be able to develop this particular state, goodwill. ठीक है, अब goodwill जो है, हाँ, yes. Oh, I didn't get the word goodwill in the. Yes, I am explaining in simple words. Okay, goodwill का मतलब क्या है? It is related to positive reputation. Okay, इसका मतलब क्या है कि जो है particular एक organization, particular एक group का if positive reputation है, ठीक है, ट्रेड में, इसको आप ऐसे समझिए कि ये गुड पॉजिटिव रेपुटेशन का क्या मतलब है उनका, कि वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इकोनॉमिक है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है. क्लियर? तो इफ ऐसा गुडविल है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो सपोज कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोडक्ट वाला, ठीक है, वो उनके साथ कोलैबोरेट करके फर्दर जो है प्रोडक्शन को और इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो those will think of, if those will research, the other organization will research कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो टाई अप करना चाहते हैं उसका रेपुटेशन कैसा है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ये तो एक पॉइंट हुआ, ठीक है. गुडविल इस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है कि जो है फर्दर दूसरे जो उनके रिसोर्स प्रोवाइडर जो यूनिट्स हैं उनके साथ उनकी डीलिंग कैसी है. ठीक है, सपोज रॉ मटेरियल वो किसी से मंगा रहे हैं, किसी यूनिट से, ठीक है, तो उनको टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, और जो है वर्बल लेवल का जो उनका कम्युनिकेशन है या जो उनका फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है कि नहीं है. ठीक है, तो ये जो है ये एक अलग टाइप की गुडविल है. ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव रेपुटेशन है. यानी वर्क कल्चर कैसा है, वर्क मैनर कैसा है. ठीक है, तो इफ ये भी अच्छा होगा तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव रेपुटेशन किसी भी रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज की यूनिट को इफ ये कंपनी, इफ ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट गुडविल, बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव रेपुटेशन, ठीक है, कोई भी यूनिट उनको इजिली रॉ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगी. अदरवाइज क्या होगा, वो हेजिटेट करेंगे कि इनका तो डीलिंग का मैनर ही अच्छा नहीं है. डीलिंग के मैनर में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, पेमेंट है, ठीक है, इंटरैक्शन विद द अथॉरिटीज, ठीक है, फर्दर और बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है ना. तो ये पॉजिटिव रेपुटेशन की वजह से जो है वो डायरेक्ट बिजनेस पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. इसके अलावा जो उनके डे टू डे अफेयर्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, उसमें भी इसका बहुत फर्क पड़ता है. एंड सपोज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद some of the government units, okay, for some of the purposes, तो उनका वहां पे भी डीलिंग एस्पेक्ट कैसा है. ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव रेपुटेशन डेवलप करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, और इफ
एक पॉजिटिव रेपुटेशन है किसी कंपनी की, तो इवन द गवर्नमेंट यूनिट्स will not hesitate to help that particular organization. Otherwise, there will be a lot of problem from that side also. So this is the, we can say this is the concept of goodwill. Okay, ये goodwill का concept है. Goodwill means status. The positive Status, हाँ, status of some organization, of some person. ये हम person से भी relate कर सकते हैं. Goodwill जो word है, ये इसको हम person से भी relate कर सकते हैं. ठीक है. You might have observed in your surrounding कि कुछ एक persons होते हैं, ठीक है, वो मतलब they have that type of we can say personality of helping people. Okay, and if they are in need of some help, okay, तो वो उस help को हमेशा consider करते हैं and they are always ready to pay back. ठीक है. या suppose कोई एक ऐसा person है, because of some urgency the person takes money from the other people, okay, but that is the image of that person कि वो, although the person takes the money, borrows the money, but he returns also on time, okay, or she returns also on time, okay, and everything is dealt smoothly. ठीक है. सारा काम जो है वो अच्छे से हैंडल होता है. ठीक है. तो ये क्या है? ये पर्सन की गुडविल है, उसका अच्छा, उसकी पॉजिटिव इमेज है, उसकी पॉजिटिव रेपुटेशन है. ठीक है, कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आ जाएगा टाइम पे. ठीक है. या जो भी टास्क है उसकी गुडविल की वजह से उसको प्रॉपर टास्क भी प्रॉपर टाइम पे मिल जाते हैं. ठीक है. या पीपल अप्रोच दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंटली. क्यों? बिकॉज सबको लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाने से हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. पीपल अप्रोच क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव स्टेटस ऑफ दैट पर्सन. ओके, पॉजिटिव रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन. अदरवाइज किसी के बारे में यदि ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है तो डे बाय डे या ग्रेजुअली पीपल विल स्टार्ट disconnecting from certain type of person. Okay, so this is the benefit of goodwill, or this is the status of goodwill. Okay, yes. And this is again depending upon effective communication skills. ये effective communication skills पे बहुत depend करता है. ठीक है. goodwill develop करना, goodwill maintain करना, ये totally इस पे depend करता है. ठीक है. Now the next point is, it is people working together to achieve individual or collective goals. This is the meaning of the word organization. Organization means people are working together. ये बहुत important phenomenon है. People work together. Organization means people are working together. Organization doesn't mean that it is one man show. Okay, it's people show. ये लोगों का show है. ठीक है. So this we need to understand. So if people are there, then each and everything in terms of the superior level, in terms of the inferior level, in terms of excellence, in terms of poor performance, in terms of average performance, okay, in terms of academic levels, social levels, okay, cultural levels, everything has to be considered. And if everything is considered effectively, then definitely there will be a goodwill. Okay, there will be a positive reputation of that organization. Okay, and people work together to achieve individual goals and collective goals. Collective goal तो क्या है? जो भी एक प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वो तो क्या है? कलेक्टिव गोल है. गुडविल डेवलप करना भी कलेक्टिव गोल है. ठीक है. यानी all the participants, all the people of that organization, those are working for the development or for coming to the state of goodwill of that organization. Okay, और जो एक ultimate production हो रहा है वो तो है ही, वो तो collective goal है ही. इसके अलावा individual goals भी achieve करते हैं professionals. ठीक है. उनका जो independent individual जो upskilling होती रहती है time to time,
उनका जो प्रमोशन होता रहता है, उनका जो एडवांसमेंट होता रहता है, उनका जो अपलिफ्टिंग होता रहता है, वो इंडिविजुअल गोल्स है। ठीक है, और जो सैलरीज जो उनको मिलती हैं वो इंडिविजुअल गोल्स की कैटेगरी में है। ठीक है, सो फॉर ऑल सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स definitely this particular state has to be effectively dealt, okay, or it has to be effectively we can say taken care of. Clear? Now the next point is the flow of communication could be either formal or informal. In an organization, as we are repeated times discussing, that it is a unit of people. It is a unit of people. Okay, so it means many are there. So for that purpose, the formal set or the formal path is equally required. At the same time, the informal path is equally required. Suppose we are sitting in office and we want a glass of water. So simply we will call the person who is available to bring some water. ठीक है, उसके लिए हम कोई एप्लीकेशन थोड़ी लिखेंगे, कोई फॉर्मेट थोड़ी लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स, या सपोज कोई पेपर मंगवाना है हमें दूसरे ऑफिस से, तो हम क्या पीएन को एप्लीकेशन लिखेंगे कि आप उस ऑफिस में जाइए और ये पेपर लेके आइए या ये फाइल लेकर आइए? ये क्या है? ये क्या है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है ये, है ना? ठीक है, लेकिन फॉर सर्टेन टास्क, ठीक है, द फॉर्मल मेथड हैज टू बी अडॉप्टेड। व्हाई? सपोज किसी ऑफिस से कोई फाइल मंगवानी है, ठीक है, एंड द पर्सन has multiple tasks to perform, and we know that multiple files are available there at a certain point of time. ठीक है, तो वहां पे सपोज अरेंजमेंट है कि कोई भी फाइल वहां से बाहर आएगी तो उसकी एंट्री होगी, और जब उस ऑफिस में कोई फाइल आएगी तो उसकी एंट्री होगी। ठीक है, रीजन बिहाइंड वो जो एक ऑर्डर है या वो जो एक मेथड है, ये कोई भी फाइल वहां से बाहर जाएगी तो उसकी एंट्री होगी, और कोई भी फाइल वहां पे आएगी तो भी उसकी एंट्री होगी। ये तो क्या है? फॉर्मल मेथड है। ठीक है, और ये मेथड क्यों है? ठीक है, बिकॉज टू सिस्टमाइज, यस, टू सिस्टमाइज द वर्क। सपोज जो है ये सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी आएगा बार बार सारी फाइलों को चेक करेगा। ठीक है, तो मे बी उससे पेपर मिसप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, पेपर्स जो है डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां से लूज भी हो सकती है। ठीक है, इंस्टेड जब एक सिस्टम है कि एक रजिस्टर में एंट्री हो रही है तो नोबडी विल गो फॉर द फाइल्स, विल चेक दैट रजिस्टर ओनली, ओके, विल चेक दैट रिकॉर्ड ओनली एट इनिशियल स्टेट। उसके बाद में एक रिकॉर्ड से उसका फाइल नंबर और जो है सब मिल जाएगा, डेट वेट का पता, तो अकॉर्डिंगली सिर्फ वो स्पेसिफिक फाइल ही पिक होगी। ठीक है, और उससे क्या होगा? टाइम भी बचेगा एक तो, ठीक है, और किसी भी टाइप का न्यूजेस जो है वो फॉर्मल बेस पे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन रीजंस कि फॉर्मल मेथड्स भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं, एंड देयर आर सर्टेन वी कैन से ओकेजन्स, वहां पे हम इनफॉर्मल मेथड से ही जो है काम कर लेते हैं वर्क प्लेस पे। तो दोनों टाइप के जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल वर्क प्लेस पे होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? फॉर्मल मेथड की। ठीक है, बिकॉज ये परमानेंट है, ये सिस्टमाइज्ड है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टास्क के लिए यही मेथड अडॉप्ट होता है, इनफॉर्मल मेथड अडॉप्ट नहीं होता। ठीक है, और ये टाइम सेविंग भी है, रिसोर्स सेविंग भी है, प्लस ये परमानेंट है, ये रिकॉर्ड भी है। ठीक है, so it is equally important, and for all these various types of purposes this particular has to be seriously effectively done. whole soul पूरे डिस्कशन का पॉइंट जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ही आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। Are you getting this point, students? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine.
Okay, so this superficial information is sufficient here. Now ये थोड़ा सा एक आइडिया हम ले लेते हैं, बाकी इसको हम डिटेल में अब स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं. ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मल्टीपल यूनिट्स हैं, मल्टीपल पीपल है, ठीक है, तो जो है उनमें कम्युनिकेशन के क्या क्या पॉसिबल डायरेक्शंस है, ठीक है. व्हाट आर द पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन एट अ वर्क प्लेस? सो अपवर्ड भी है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट जो है कम्युनिकेशन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में भी कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है. सो एंड इन 3 के अलावा जो है एक इरेगुलर डायरेक्शन में भी कम्युनिकेशन होता है, जो कि टोटली इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कभी कभी यू Yes, विल ma'am. हाँ, you will observe that the highest authority, okay, of that organization is trying to get some information from the driver. That is the irregular direction, informal communication at a workplace. Okay, just simple सी information पूछ ले ड्राइवर से किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल के लिए कि वो ऑफिशियल जो है वो टाइम पे वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, ठीक है. तो वो इस तरीके का कोई सिस्टमाइज्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन नहीं है, वो इरेगुलर डायरेक्शन का कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है टोटल, ठीक है. ये तीनों डायरेक्शंस तो मोस्टली फॉर्मल टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन वो जो इरेगुलर डायरेक्शन का कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है एट अ वर्क प्लेस, ठीक है. तो उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है. उस इनफॉर्मल, अब सपोज वो ड्राइवर ने यदि सही इंफॉर्मेशन दी है देन इट इज ओके. सपोज उस ड्राइवर ने कोई मैनिपुलेशन कर दिया तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे आप, somebody from your side. The goodwill will be ruined नहीं of the company. नहीं, वो उसको छोड़ो, आप बहुत नेगेटिव पे मत जाओ, ठीक है. उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? Can you repeat the That question once? official will be cross checked. वो ऑफिशियल जो है वो क्रॉस चेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. उसको वो ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, वो उसको देखेंगे कि हाँ सच में ये आता है कि नहीं आता है, क्या करता है. इज इट सो? एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. तो मतलब ये भी ये टाइप्स ऑफ ओकेजन्स हैं कम्युनिकेशन के एट अ वर्क प्लेस, ठीक है. तो इवन वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसका कोई जो है फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है. कई बार वो वर्क प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है. जैसे सिंपल सा इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ ना कि जो सपोज हायर अथॉरिटी को कुछ चेक करना है या कुछ उनको ये सारी चीजें थोड़ी सी रेगुलेट करनी है, तो द हायर अथॉरिटी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑब्जर्विंग. उससे पहले शायद वो नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाएगी. तो ये इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट है उस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, उस इरेगुलर डायरेक्शन कम्युनिकेशन का. इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, ये जो आपने मैम, कैन यू टेल द टाइप्स ऑफ, कैन यू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल? ये देखो इसमें लिखा हुआ भी है ना, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन का जो है, इसका फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन जो है, सपोज द हायर अथॉरिटी वांट्स, ठीक है, कि जो है कितना प्रोडक्शन हुआ मंथ में, कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है. तो the subordinates will provide that information to the higher authority. That is information share, information transfer, ठीक है. ये एक टाइप है. इवन ये इंफॉर्मेशन शेयर का जो है इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है. तो सपोज हायर अथॉरिटी ने कोई रिपोर्ट मांगी, ठीक है, विच इज इंफॉर्मेटिव, तो वो जो है दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? अपवर्ड डायरेक्शन कम्युनिकेशन. यानी सबऑर्डिनेट ने वो इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड हायर अथॉरिटी को दी, ठीक है, तो वो अपवर्ड है.
Is this point clear, students? टाइम टू टाइम जो प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो मैनेजर्स को सबमिट होती है, वो सारी अपवर्ड डायरेक्शन का कम्युनिकेशन है, ठीक है। Yes. अभी जैसे Yes. आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ठीक है, टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ये जो है प्रपोजल प्रिपेयर करना है, उसकी एक रिटन रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, डाउनवर्ड, यानी हायर अथॉरिटी ने सबऑर्डिनेट को जब दिया तो वो डाउनवर्ड हुआ। अब आपने उसको, सपोज आपने उसको एक्सरसाइज किया, आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी और आपने वो रिपोर्ट जो है वो टीचर को सबमिट करी, यानी स्टूडेंट ने टीचर को सबमिट करी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हुआ। और जब टीचर ने आपको वर्क टास्क दिया तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। क्लियर हुआ क्या ये बात? ये बात क्लियर हुई Yes. आपको, है ना? Yes, ठीक है, ma'am. हाँ ठीक है। तो ये है, तो मतलब ये वेरियस On what कॉन्टेक्स्ट है, इनको अभी हम डिटेल में और करेंगे। हाँ Horizontal. हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल Friends स्टेटस के जो ग्रुप है, ठीक है, जो भी वर्क प्लेस है, तो पैरेलल स्टेटस के जो पर्सनल्स हैं, among us Those who them have the if same some post. information, no, among us them if information is shared, suppose I know something, I received some information, okay, and I am passing that information to my fellow teachers, that is horizontal, ठीक है। Yes. सपोज आप में से किसी एक स्टूडेंट को मैंने कोई इंफॉर्मेशन कन्वे की और मैंने आपसे कहा कि यू प्लीज शेयर और यू प्लीज ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू अदर क्लासमेट्स ऑफ योर्स, ओके। सो मैंने जो आपसे कहा वो तो डाउनवर्ड है, ठीक है, लेकिन आपने जो अपने क्लास फेलोज को इंफॉर्मेशन शेयर की वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. अभी क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. हाँ ठीक है। सो आई थिंक टुडे वी कैन एंड द क्लास टुडे हियर इटसेल्फ, द टाइम इज आल्सो running short. It is 10:18 already. So students, I have assigned you the IMCRP test for today's class, okay. Go through that, and I think some new students have joined in your section, but in this class I am not able to see any new name. I'm attending your class for the second time only, ma'am. जितेंद्र, Yes, ma'am. ये जितेंद्र है ना? हाँ ठीक है, बट मैं तो फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट के लिए बात कर रही हूँ। क्या आज फर्स्ट टाइम कोई आया है क्या? आई थिंक नहीं है। Ma'am, हाँ where do you send the Yes, ma'am. assignments? Like, यस बताइए। ma'am, where do you send the assignments? Like, I don't. असाइनमेंट्स मैंने अभी जस्ट बिफोर यू जॉइंड आई वाज शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद वन ऑफ द स्टूडेंट कि मैंने अभी गूगल क्लासरूम अकाउंट फॉर्म कर लिया है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है। सो प्लीज वहां से कोड लेके आप ज्वाइन कर लीजिए गूगल क्लासरूम, एंड आपको टाइम टू टाइम जो है वो थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्लास के मैंने अलग अलग क्लासरूम फॉर्म किए हैं, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली असाइनमेंट्स वहां से मिलेंगे। एंड मोर थिंग स्टूडेंट, I will be sharing the complete syllabus of this paper in that Google Classroom only. So आपको syllabus के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन आज मैं इवनिंग तक वो शेयर करूंगी, ठीक है, बिकॉज आई हैव माय कंटिन्यू क्लासेस, उसके बाद में मैं आपसे शेयर करूंगी ये, ठीक है। Yes, ma'am. तो आप एक बार अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड प्लीज note down the code for the test, although you can find in the ARP account itself, that is 20200 10950. This is the test code for today's class activities, okay. So I think now you have other class to join. So if you do not have any question, you can leave, or if you have some query, you can place it. Yes, students.
Any question? No, ma'am. Okay, No, ma'am. fine. Fine. Fine, then you can leave.